Hello everyone, welcome to Odisha Education Service. तो ये लेक्चर में प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च इन एजुकेशन ऊपर डिस्कशन करिवा। ए हमरो इंट्रोडक्शन लेक्चर रहिबो। आमे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सुपरविजन सेक्शन रो प्रिंसिपल हिगला एजुकेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सुपरविजन एजुकेशनल फाइनेंस ऑलरेडी कवर करि सरिछे। हमरो ए जो लेक्चर सीरीज रहिबो एथिरे आमे प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च रो जो पार्ट गुडा को रहिछि लाइक द हमर 5 year plan हिगला quality of educational opportunities, educational or the handicapped children and research in educational administration जो रही छि हमरो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिसर्च रो ताको हमें डिस्कशन करिबा। एई लेक्चर रे हमें मेनली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिसर्च ता कोन गुडे बेसिक आईडिया नबा तापरे लेक्चर बाय लेक्चर हमें 5 year प्लान और बाकी जो अछि ताको हमें कवर करिबा। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन and the research in the education. So planning, organization and research are the three important foundation of educational system. हमरो educational system रे planning, organization and research ता बहुत ही important role play करी थाए. They helps in the school, college, university, government to improve teaching, learning, administration, curriculum and educational development. तो आमे फास्ट हम डिस्कशन करिबा प्लानिंग ऊपर मीनिंग ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग educational planning is the systematic process of the setting the educational goals and deciding how to achieve them effectively using the available resources. It involves identifying the educational needs, setting objective, preparing policies and program, allocating resources, implementing and evaluating the educational activities. हमरो जते भी एजुकेशनल एक्टिविटीज अछि सब को इंप्लीमेंट करबा पई हमरो गोल सेटिंग करबा पई एजुकेशनल नीड्स को आइडेंटिफाई करबा पई हमरो प्रॉपर एजुकेशनल प्लानिंग रा आवश्यकता रही छी। तो अकॉर्डिंग टू कैरिल ओ ह्यूले मतरे एजुकेशनल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फ्यूचर एजुकेशनल एक्शन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल्स। तो हमरो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग मध्ये रही छी। तो our first characteristic है goal oriented, focused upon the achieving the educational objective, goal oriented हवा कथा, then future oriented मध्ये हवा कथा, plans for the future educational goals, continuous process planning is ongoing and dynamic. Then our systematic, follow the passive scientific procedure and the logical step, flexible मध्ये हवा कथा कि can be modified according to the changing need हिसाब रे changing करि परिबा, continuous रहिबा कथा एकटा फ्यूचर ओरिएंटेड हवा कथा गोल ओरिएंटेड हवा कथा रिसोर्स बेस्ड यूज द ह्यूमन फाइनेंशियल एंड द फिजिकल रिसोर्सेस एफिशिएंटली देन हमर रहिला डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटर मेक द एजुकेशनल डिसीजन ए सब हला हमर ଗୋଟେ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग देन हमें जिबा ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग ता कोन कोन रहिछि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करबा हला टू एंश्योर द इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इंक्रीज द लिटरेसी एंड द एनरोलमेंट लिटरेसी और एनरोलमेंट को इंक्रीज करबा टीचिंग स्किल को इंप्रूव करबा ए सब हमर प्लानिंग रास्ता अछि टू डेवलप द मैन पावर फॉर द नेशनल डेवलपमेंट यूटिलाइज द एजुकेशनल रिसोर्सेस इफेक्टिवली रिड्यूस द वेस्टेज एंड stagnation और wastage को हमें reduce करिवार अछि then achieve the national educational goals national जो educational goals अछि ताको मध्ये achieve करिवा अछि हमर main objective of educational planning then हमर रहिछि different type of educational planning administrative planning हिगला concerned with the management administration समिति academic planning राशि related to the curriculum teaching and the evaluation financial planning अछि concerned with the budgeting and the expenditure institutional planning रे रहिबो prepare by the individual school or the college एटा हमर institutional planning ता individual जो school हो कि college हो कि university जो माने निजे प्लानिंग करबे कोन रहिबो institutional वर्क के जाबि दिबो then short term planning prepared for a short duration पई planning रहबो सेटा उडे planning करबो 1 year पई जदि हम लेबा एग्जांपल then long term vision मध्ये रहबार छै तो long term planning रो मध्ये आवश्यकता रहि छै prepared for the many years of the long term year then strategic planning focused upon the long term vision and the mission हम strategy planning करिबा कि हमर long term vision कोन रहबो हमर educational goals कोन रहबो long term रे हमर केमति आउटकम मिलिबो सेगुडो को मध्ये हमर educational planning रा सूचना मध्ये टाइप हिजिबो
देन आमर स्टेप ऑफ द एजुकेशनल प्लानिंग आमर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप गुड़ाक अच्छी एजुकेशनल प्लानिंग रो तो डिफरेंट बुक रे वेरी करि पारे बट आम सिस्टमेटिक जो अच्छी गोटे नॉर्मल जो स्टेप गुड़ाक अच्छी ताको आम एदर डिस्कशन करबा तो फास्ट है कि आमर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एजुकेशनल नीड आमर एजुकेशनल नीड को आइडेंटिफाई करिवार अछि देन आमर सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेट करबा तर गोल सेट आमर एजुकेशनल नीड हिसाब रे आमे ऑब्जेक्टिव सेट करबा देन आमर कलेक्शन ऑफ डाटा डाटा कलेक्ट करबा फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान फॉर्मुलेट करिवार अछि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस रिसोर्स एलोकेशन है वही जगह इम्प्लीमेंट करबा इम्प्लीमेंटेशन रहइबो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप 6 नंबर आसी जिवो देन आमर मॉनिटरिंग एंड द सुपरविजन देन इवैल्यूएशन एंड द फीडबैक एहला आमर 8 स्टेप रे हमें एजुकेशनल प्लानिंग करि परिबा होय तो अंदर बुक गुडा करे किछि अदर भी किछि ऐड करिथांती कि मॉडिफिकेशन किछि रहि पारे बट सिंपल जदि हम देखिबा ताले ये सब स्टेप गुडा को देखि ही जिबा को पड़िता एजुकेशनल प्लानिंग रे देन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंश्योर द स्मूथ functioning of education helps achieve the educational goals improve the efficiency of institution promote national development helps policy formulation reduce the educational inequalities encourage the scientific management ये सब हो गला हमर एजुकेशनल प्लानिंग रो इम्पोर्टेंस देन हमर रहिला ऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशन फर्स्ट अछि हमर मीनिंग ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन educational organization refers to the arrangement and coordination of the humans material resources in education for achieving the educational objective effectively. It includes the structure of educational institution, distribution of duties, coordination among the staff, management of resources. Definition है कि हमारा according to the Chester Branard's organization is a system of consciously coordinated activities of the peoples. The characteristic of educational organization our different characteristic अछि फार गला हमरो फर्स्ट देछि गोल ओरिएंटेड हवा कथा डिवीजन वर्क रो डिवीजन हवा कथा कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज हायरार्चिकल स्ट्रक्चर रहबा कथा कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स मानक मध्य ऑर्गेनाइजेशन रो कोऑर्डिनेशन रहबा अछि अथॉरिटी एंड रेस्पोंसिबिलिटी कंटीन्यूअस फंक्शनिंग तो ये सब होगला हमर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन देन हमर प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द क्लियर ऑब्जेक्टिव सब ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर ऑब्जेक्टिव थिबा कथा देन प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज शुड बी कोऑर्डिनेटेड प्रॉपर्ली प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन principle of unity of command one employee should receive order from the one superior only ताको हमें unity of command बोली कहूचे principle of delegation authority should be delegate properly principle of the flexibility organization should adapt to change principle of simplicity organization structure should be simple एगुडो को हमें ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर गुडा करे मध्य डिस्कशन ऑलरेडी करि सरिछि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन रे हमरो अछि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ताको ऑफिशियल ऑर्गेनाइज्ड रहित बतल तमे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोली कहूची इनफॉर्मल ही गला हमरो पर्सनल रिलेशनशिप विथ द इंस्टीट्यूशन जातिबो आता को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहबा centralized organization decision making controlled by the central authority जदि central authority रहउछथि decision making रे ताको हमें centralized organization बोली कहउछि देन हमर decentralized organization authority distributed among the different level जदि authority रा distributed हे करथिबो scattered हे करथिबो ताले हमें ताको decentralized organization बोली कहबा then function of the educational organization distribution of duties, coordination of activities, management of resources, supervision and control, maintaining discipline, improving efficiency, achieving educational goals. ये सब ही गला हमरो बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन देन हमरो इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन आसी जो हमरो एंश्योर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर करिबार जे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होची कि नै टू मेंटेन
maintain discipline and coordination, enhance efficiency, clarify rules and the responsibility, improve communication, helps in effective management. ये सब आसीଯିବ ଆମର importance of educational organization रे. Then ଆମେ ଚାଲି ଆସିବା research in education. ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ସମରି ହିସାବରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଯେଉଁଠି ବି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଗଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ସମରି ଆମେ ଯଦି ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ହେବ ବହୁତ ଲେକ୍ଚର ସାର୍ ଲାଗିବ ସେଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଚାପ୍ଟର ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ବେସିକ୍ ଯାହା ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଯିବା ତ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ processes and practices to improve education. It involves the collection of the data, analysis of educational issue, testing hypothesis, finding the solution to the educational problem. तो एठारे हम गोटे डेफिनेशन मध्य नेबा जेडब्ल्यू बेस्ट एटा जेडब्ल्यू बेस्ट फॉर गोटे डेफिनेशन अछि educational research is the systematic and objective analysis and according to the control and recording of control observation या होची हमरो जेडब्ल्यू बेस्ट करो गोटे डेफिनेशन characteristic of educational research ଆମର जो characteristic रहिछि ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ହେବା କଥା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର ହେବା କଥା ଏମ୍ପିରିକାଲ ଇନ୍ ନେଚର ହେବା କଥା କି ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ହେବା କଥା ଯାହାକି ଆମେ ଏମ୍ପିରିକାଲ କହୁଛେ ଲଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିଟିକାଲ ହେବା କଥା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେବା କଥା ୟୁଜ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ମେଥଡ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ହେଇକି ତାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହେବା କଥା ଏସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସିକ୍ ନ୍ୟू ନଲେଜ କିଛି ନ୍ୟू ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିକ୍ କରିବାର ଅଛି then ଆମର ରହିଲା objective of educational research to discover the new educational facts then improve the teaching method ଆମର teaching method को improve କରିବାର ଯେ solve the educational problem ଯଦି ଆମେ research କରିବା education ରେ କେମିତି educational जो problem ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ solve କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଟା outcome ମିଳିବ ଆମର then ଆମର evaluate the educational program को ମଧ୍ୟ evaluate କରାଯାଇଥାଏ different scheme ଗୁଡାକ ହେଲା ସବୁକୁ evaluate କରିବାର ଅଛି research ମାଧ୍ୟମରେ improve the curriculum and the policy ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କରିକୁଲମ୍ ଥିବ ତାର ନିଡ୍ସ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯିବ ତାପରେ ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା ତ ଡେଭଲପ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଥିଓରିଜ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନାଲ ଥିଓରିଜ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହେବ ତ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ or the basic research develops the theories and principle जो research रे हमें theory develop करते principle develop करते ताको हमें fundamental research बोली कहूचे then applied research solve the practical educational problem then action research conducted by the teacher for classroom improvement यदि classroom रे immediate problem solving करिबारे ताटे मोर action research टा involve होते then historical research studies the past educational event descriptive research describe the educational situation experimental research studies the cause and effect relationship. Qualitative research focused upon the experience and the meanings. Quantitative research use the numerical data and statistics. तो ये सब आम एजुकेशन पर्सपेक्टिव रे डिस्कसन कले यार आम जब चाहिए ताहले बहुत ही डिटेल्स आम डिस्कसन कर बट से आवश्यकता नहीं स्टेप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप रे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिवार अछि तारपर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करिवा देन फॉर्मूला हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करा जिवो देन रिसर्च डिजाइन एंड प्रिपरेशन करिवा देन कलेक्शन ऑफ डाटा रहिवो देन हमर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हेबो नेक्स्ट हमर कंक्लूजन एंड रिपोर्ट राइटिंग ए होजे हमर बेसिक स्टेप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च देन इंपोर्टेंस ऑफ educational research improve the quality of education ଆମର education ର quality को improve କରିବାରେ ଅଛି helps in the policy maker help develop the better teaching method solve the classroom problem support the curriculum development enhance the educational administration and improve innovation in education ये सब होगला हमर importance of educational research ର educational research तो नेक्स्ट हमें जो रिलेशनशिप एमंग द प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिसर्च गोटे कंपैरेटिव एनालिसिस करा जैते एटा आपण निहाती भाव में पढ़ी नेबे एते किछि ज्यादा किछि नै देन हमें कंक्लूजन को पले आसीबा तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिसर्च आर द इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन
Educational planning set the goals and the strategy. Organization arrange the resources, activities. Research provide the scientific knowledge for the improvement. Teachers, they help in achieving the quality education, effective administration and the national development. So ଆମର ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଯୋଉ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି କି ଆମର ଯୋଉ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଇଗଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ତ ମେନ୍ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା କି ଆମର କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯାଇପାରିବ କେମିତି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇପାରିବ କେମିତି ଆମର ନେସନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଆମର ଗୋଲ୍ସଟା ଆଚିଭ୍ ହେଇପାରିବ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମେନ୍ ଏମ୍ଟା ତ ଆମେ ଅଲରେଡି ଏଠାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଅନୱାର୍ଡ ଆମେ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଯିବା ଏଜୁକେସନରେ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅପକମିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିପ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ